अब्दुल्ला अब्दुल्ला। अदनान। हाँ, तो अब्दुल्ला पुराने सिलेबस में हमारा ये टॉपिक डायनामिक्स के नाम से था, लेकिन इसका नया नाम क्या है? फोर्सेस। ठीक है। सो जब हम बात करते हैं फोर्सेस की, इस टॉपिक में हमारे पास 6 सब टॉपिक्स हैं। 1.5.1 हमारा जो टॉपिक है, दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है 1.5.2, दैट इज फ्रिक्शन। तीसरा टॉपिक है 1.5.3, दैट्स इलास्टिक डिफॉर्मेशन। फोर्थ टॉपिक इसमें है 1.5.4, दैट्स सर्कुलर मोशन। 1.5.5, that's turning effect of forces. 1.5.6, center of gravity. Center of gravity. So इस चैप्टर में हम ये 5 टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, फ्रिक्शन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, सर्कुलर मोशन, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। No. दिस इज क्लियर, राइट? ओके। सो ये सब टॉपिक्स जल्दी से नोट कर लो सब अपने पास। नोटेड? Yeah. सब मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बाकी लोग। with has done, शाबाश। गुड। चलो, इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल कि अगर आप लोग मुझे माइक पर रिस्पॉन्ड करो, सो आई वुड नॉट हैव टू गो एंड लुक फॉर द मैसेजेस सेपरेटली। ये अच्छा होगा अगर आप लोग मुझे डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर लो। ऑलराइट। सो अब if you are done with that, now give the heading balanced and unbalanced forces. और बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस में जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली आपके पास 8 पॉइंट्स हैं। तो मेन चैप्टर हमारा था फोर्सेस। फोर्सेस में ये 5 टॉपिक्स है जो डिस्कस करेंगे। और उसमें पहला टॉपिक क्या है भाई? द फर्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है। अब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या क्या है जरा गौर से देखिएगा। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस में सबसे पहली चीज है, you should be able to identify and use different types of forces.
including weight, or what we call the gravitational force, friction, drag, air resistance, tension, which is also called the elastic force, electrostatic force, magnetic force, thrust, that's also called the driving force, and contact force. So you all should be able to identify and use these different types of forces. अब कितने types के forces हैं भाई? एक, दो, sorry, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, and आठ. ठीक है? These are 8 different types of forces. You should be able to identify and use these forces. ठीक है? Is पहला point. compression a type of force as well? Like when a force that squeezes an object, that's called compression. Is that a force as well? Compression or tension, it's the same force. ठीक है? That is called the tension force. Tension force is due to stretching a spring or due to compressing a spring. ठीक है? अब्दुल्ला, क्लियर हो So रही है is यहाँ तक? compression and tension the same? या Sir, I went to grab my notebook. So, come again. You want your notebook? You want to get your notebook right now? sir, I went to get my notebook. So, can you repeat, please? All right. I'm saying that you should be able to identify and use different types of forces. Okay? And those forces include what? Weight. Those forces include friction. Those forces include drag, air resistance, tension, electrostatic force, magnetic force, thrust, and contact force. These are all different types of forces that you should be able to identify and use, right? So this is the first point in the first Okay, subtopic, sir. balanced and unbalanced forces. You should be able to identify these. Then you should be able to identify forces acting on an object and draw free body diagrams. So you should be able to identify forces acting, and you should be able to draw free body diagrams that will represent all the forces. ठीक है? तो सबसे पहले तो types of forces identify करना आना चाहिए. Then you should be able to identify forces acting on an object. The different types of forces that are acting on an object. And then you have to draw the free body diagrams. So दूसरा point जो आपको पता होना चाहिए वो ये. ठीक? Yeah, Then sir. you should be able to state Newton's first law. इस chapter में you should be able to state Newton's first law. And what is that? देखो अब ये वो चीज है जो आपको as it is पता होनी चाहिए. इसको मैं highlight कर रहा हूं, बल्कि इसको मैं बॉक्स में शेड कर दूंगा. ये जो चीज है you should have, समझना तो है ही है, इसको हम समझेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको समझना है तो ये आपको याद तो लाजमी करना. यू हैव नो अदर ऑप्शन. ठीक है? सो एन ऑब्जेक्ट either remains at rest or continues to move in a straight line at constant speed unless acted on by a resultant force. ठीक है? So Newton's first law क्या है? An object either remains at rest or continues to move in a straight line. An object either remains at rest or continues to move in a straight line at constant speed unless acted on by a resultant force. So आप लोग अपने पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की हेडिंग देके ये लिख लो अलग से बॉक्स में बना के ना. ठीक है? उसके बाद स्टेट, लेट मी नो व्हेन यू आर डन राइटिंग विद द फर्स्ट लॉ. मैं 1 मिनट दे रहा हूँ इसकी लिखने की.
Done? Yes, I'm done. Good. Yes, sir, done. All right. उसके बाद state that a force may change the velocity of an object by changing its direction or its speed. So this is one of the effect of forces. A force may change the velocity. Force may change the velocity of an object by changing its direction of motion or its speed. So, Abdullah, you have not studied with me the topic of vectors, but Hania and Vadha, you must recall, हमने vectors पढ़ा था ना? Scalars and vectors. Yeah. Hania, Yes. scalars क्या होते हैं बेटा हानिया? Scalars have magnitude and direction, and vectors only have magnitude and no direction. अच्छा, लिंता, ये इन्होंने सही बताया है? Yes, sir. वधा? Um, Scalars, like I think she switched it up. Because scalar needs only magnitude unit but no direction, and vector need magnitude Perfect. unit and direction. Perfect. Very good. So vectors need direction. Hania, vectors need direction. Scalars को direction की जरूरत नहीं होती. Abdullah, you need to remember this only for scalars and vectors. Scalars are quantities which need only magnitude and direction. मतलब आप 20 kg अगर लिखोगे ना अब्दुल्ला, तो it is enough to identify mass. आपने ये नहीं बताना कि 20 kg की डायरेक्शन क्या है, लेकिन अगर आप कहोगे 20 न्यूटन फोर्स, तो आपको ये बताना पड़ेगा 20 न्यूटन फोर्स किस तरफ, वेयर, विच डायरेक्शन इज इट एक्टिंग. ये बात समझ आ गई? ये डिफरेंस समझ आ गया अब्दुल्ला? Yes, sir. तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती. उनका आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, यूनिट बताओ, काम हो जाएगा. मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं बेटा अब्दुल्ला? वैल्यू को. 20 kg में 20 मैग्नीट्यूड है एंड kg यूनिट है, राइट? सो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट बताओगे आपका काम हो जाएगा. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट बताने से काम नहीं होता, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा. Okay, sir. ठीक है. ऑलराइट. सो अब मैंने ये बात क्यों की यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर उसने लिखा था स्टेट दैट फोर्स में चेंज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. तो किसी ऑब्जेक्ट की अगर सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज हो जाए ना, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. या अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करते हो, सीधी लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसका सिर्फ स्पीड चेंज कर दोगे तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड से भी चेंज होती है और वेलोसिटी डायरेक्शन से भी चेंज होती है, राइट? अब्दुल्ला, ये बात इजी है समझना? सर एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. और वेक्टर क्वांटिटी आपके पास डायरेक्शन से भी चेंज हो सकती है. आप सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर लो तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. आप अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करते हो, तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. सही है? Yes, sir. राइट. सो जब आप किसी चीज पर फोर्स लगाओगे, उसका अगर डायरेक्शन चेंज कर लेते हो फोर्स से, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी. उसकी स्पीड चेंज कर लो तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है. ठीक. Determine the resultant. You should be able to determine the resultant of two forces. ठीक है. Resultant कैसे निकालेंगे ये आना चाहिए आपको. And resultant का फॉर्मूला क्या है? Resultant force is mass into acceleration. Resultant force
is mass into acceleration. F is equals to ma. ये resultant force का formula है. फिर उसके बाद सेकेंड लॉ नहीं, डायरेक्टली थर्ड लॉ पे आया है. कह रहा है स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ. और थर्ड लॉ क्या है? अगेन इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इसको भी आपने लिखना है न्यूटन थर्ड लॉ की हेडिंग में. When an object exerts a force on object B, then object B exerts an equal and opposite force on object A. So this is the law that you should know. ये वाला लॉ लिख लो सब अपने पास. डन, लिख लिया. Done. ऑलराइट, अब अगली चीज क्या Yes, है भाई? sir. ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, it describe pair of forces of the same type acting on different objects. It describe what? It describe pairs of forces of the same type. It describe pairs of forces of the same type. इसमें आपके पास फोर्सेस सेम टाइप्स की होंगी. तो जब भी न्यूटन थर्ड लॉ लिखो ना, उसके साथ ये वाली बात लाजमी लिखनी है. राइट दिस स्टेटमेंट आफ्टर राइटिंग द थर्ड लॉ. अच्छा, ये चीजें मैंने पहले क्यों लिखवाई? चैप्टर भी स्टार्ट नहीं करवाया, ये मैंने लिखवा दी है इसलिए कि इस चैप्टर में ये चीजें बाय हुक और बाय क्रुक आपको पता होनी चाहिए. इसको हम समझेंगे, विल अंडरस्टैंड इट इंशाल्लाह ताला. लेकिन आई रिपीट कि आपको समझ आए या ना आए, आपको ये रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए, क्योंकि ये आता है, इसके मार्क्स होते हैं. ठीक. अब पानी में डन. Wait, I'm writing it down. Okay, done. ऑलराइट, एवरीवनस डन. हानिया आप बताओ मुझे. हानिया, Done, sir. Yes. लिख लिया आपने बेटा ये तीनों बातें जो मैंने आज लिखने को बोली हैं? Yes. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हम समझेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह. हानिया, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर समझ नहीं आता ना, तो आपको ये रटे हुए लाजमी होने चाहिए. ठीक है. Okay. Okay. ऑलराइट. सो ये तो मैंने आपको फॉर्मली सिलेबस बताया कि क्या क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं ना. ठीक है, सिलेबस का एक एक कंटेंट बताया. अब मैं ऑफिशियली इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, और सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की. तो भाई जब हम फोर्स को डिस्कस करते हैं ना, फोर्स, सो फोर्स क्या है? कोई बता सकता है? कैन समवन टेल मी व्हाट इज अ फोर्स? इट्स अ पुश. I was gonna say amount of like a pressure ऑलराइट, exerted on a body. so it's basically a push or a pull that one body exerts on another.
Can the definition of a body adding pressure to another body, it could also be correct? Okay, if I define pressure now, pressure is defined as the force per unit area. So pressure is not the force. Okay, pressure Okay. is not the force. It is defined as the force per unit area. Okay, All right. so force is a push or a pull that one body exerts on another, or I can say it's an interaction between two bodies. An interaction between two bodies. All right. Excuse me, sir. जी Excuse me, sir. जी जी बेटा. Sir, can we write it like the push or pull on an object with mass causes it to change its velocity? Come again. The push or pull on an object with the mass causes it to change its velocity. Can we ठीक write है. it like this? You can write it like that. You can write it like that. But this is the Okay. simplest definition that I have written. Okay. So it's an interaction between two bodies. ठीक है. And then अगर मैं force की बात करूं, force करता क्या है? Effects of forces. Effects of forces. बस जज़ाक अल्लाह. Effects of forces. What can a force do? Force can change the direction of a moving body. And change the speed. Yes. Force can change the speed, और speed कैसे change हो सकती है? Speed can increase, speed can decrease. Yeah. All right. Force can do what? It can change the The shape. size. Shabash. Size or shape. It can Size. stop a moving object. Yes, it can stop a moving object. So it means it can slow it down, right? I'll just write it for you, but it means the same thing. It can stop a moving object. Abdullah, Yes, sir. is this clear so far? चीजें समझ आ रही हैं? Yeah. Or it can you think of some effect of forces, Abdullah? So it can stop an object or it can bring a stationary body to motion. These are all the effects of forces. It can accelerate or decelerate a body, right? चीजें समझ आ रही हैं? कोई मसला, कोई परेशानी? It's clear. All right. जब हम forces की बात करते हैं ना, so we should know the SI unit. So SI unit of force, standard international. SI unit is newtons. Newtons. We write it as N. Okay. So force is given in newtons. And force is a scalar quantity. It is a scalar quantity. It is a, sorry, my bad. It's a vector quantity. Means you have to give the direction, right? Magnitude
unit and direction is needed. Right? Any problem? It's clear. All right. Magnitude, unit and direction is needed. उसके बाद क्या हो सकता है? Oh, meeting will end in 10 minutes. क्या बात? We'll 10 मिनट बाद अगर हमारी मीटिंग एंड होती है, we'll restart. ठीक है? Okay. Device used to measure force. Can someone tell me? अब्दुल्ला, force किस चीज से measure कर सकते हैं? Can you tell me a device that is used to measure force? You, anyone else? Sir, can Hania? I? Linta, is it you? Yes, sir, can I? Uh, just hold on. Let me ask Hania. Hania, can you tell me Okay. any device that is used to measure force? चलो, Linta, आप बताओ मुझे. A Newton meter. Newton meter. Vada, can you tell me of anything else? Maybe a force gauge. Force gauge बता सकते हो बिल्कुल. That's the same thing. Newton meter का दूसरा नाम force gauge है, लेकिन हमारे सिलेबस में या तो न्यूटन मीटर यूज हो सकता है या फिर दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है, that's called spring balance. Spring balance. Force gauge के बजाय Hani, it was you force gauge. No, sir. किसने force gauge किसने बताया? You can write force meter if you want to be your syllabus specific. तो force meter लिख दो. Right? Force meter. These are the different names for the same device. Okay. Now examples of forces. We need to list down some examples of forces. Like types of forces. Yeah. Okay. So I'll write it down. Number one, it's friction. It's friction. Number two, it's tension. Electrostatic forces. Oh, yes, it is. Electrostatic. It's air resistance. Then it's drag force. अच्छा, उसके बाद आपके पास आ सकता है. You were telling me some force. Yeah, electrostatic force. Yeah. Electrostatic force. Electrostatic. Electrostatic.
force. What else? Can someone else also tell me? Can it be gravity? Good, it is. Weight or gravitational force? Weight के दूसरा नाम क्या है? Gravitational force. What else? जल्दी बताओ, एक फोर्स रह गया. कम ऑन अब्दुल्ला, आप बता सकते हो कोई फोर्स का नाम? अब आपकी बारी है. I have a question. Yep. What is drag force? I'll discuss that. Oh, okay. Okay. So the Because I thought last, drag force is like air resistance as it well, is like it the is same it thing. is it is it is like that. In fact, air resistance is one type of drag force. But drag force, I have mentioned it separately because when something moves in liquid, the liquid molecules rub against that object. That force it creates against the motion is called the drag force. ठीक? All right. All right. So I have listed these 7 different types of forces. There's also thirst, up thirst. Thrust force, Mhm. that's called the driving force. It's not the upthrust, it's thrust, right? Upthrust is something different. All right. Okay. So thrust is the driving force. Okay. Now, I have listed all these 7 types of forces in 2 columns. Have I listed them just coincidentally or deliberately, or was it because the page was ending? Why have I listed them separately? Can you think of a reason? I thought you were doing it to make it look more organized. Um, no. Come on, अब्दुल्ला सोचो, ये मैंने 2 अलग कॉलम्स में क्यों लिखे हैं? क्या रीजन हो सकता है? और मसला नहीं है अगर आप गलत रीजन बताओ, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट हैव टू टेल. आप बोलो, आप अभी नहीं बोलोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी. They have like certain categories. Like for example, friction, air शाबाश. resistance, and tension and drag force have like some similarities, and then electric force, and then magnetic force and weight, gravitational Yes, force. very good. They So have there are 2 some. categories of forces. And can you tell me those 2 categories by name? Linta, Hania, Oh yeah, there was contact force Balance and और non-contact forces. शाबाश. So basically ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ना इधर, ये सारी की सारी forces, these are contact forces. All these forces, sorry, these are non-contact forces. Non-contact forces. There was another name for non-contact forces, Vadha. Can you recall? Um, field forces. Excellent. So it means you are good at noting stuff. Contact forces. Or we call these field forces.
All right, and these are, मैंने फिर गलती से लिख दिया. It's non-contact. These are contact forces. And what was another name for non-contact forces? Or there was no name? For non-contact forces, there was field forces. And for And contact forces?